और तमाम साहब आपको खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ सभी खरीद के साथ होंगे। दुआ दूं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आप सभी को अपनी हिफ्ज़ अपना में रखे, आप जान रहे, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बातें करेंगे आपकी ज़ुबान पे और अंग्रेज़ी ज़ुबान पे, क्योंकि आज जो हमारे मेहमान उसमें अंग्रेज़ी बोलने वाले जमीन, तो मैं कोशिश करता कि अपनी ज़ुबान जी उन्होंने मैसेज आज जितने जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उसकी ट्रांसलेट कर सका और अपने लोगों तक पहुँचा सका। आज का जो प्रोग्राम है जिसके तौर पर कोरोना वायरस दायरा एक सब्जेक्ट है, लेकिन इस प्रोग्राम में साथ नाल जड़ा कोशिश करी ना वो है कि तालीम दी जाए, कुछ इल्म दिता जाए, नॉलेज दिता जाए और नॉलेज जड़ा कि शायद असां कोल उस पता नहीं है उन्हां लोकां कोल जेह्ड़े कि समझने, जानने और बुझने और इस हवाले नाल कम करने कम क्या करने अज हमारे मेहमान जेह्ड़े वो इस हवाले नाल एक्सपर्ट है। सबसे पहले मैं वेलकम करना आई रियली वेलकम डॉक्टर जस्टिन वार्नी। डॉक्टर जस्टिन वार्नी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ डायरेक्टर है बर्मिंघम ने और कम्युनिटी क्लोज कम करने और एक्सपर्ट ही है। डॉक्टर वर्नी, वेलकम टू माय शो। Thank you for having me. I'm delighted to be here. एंड उन्हें नाल हमारे नाल काउंसलर वसीम जफर साहब हमारे खिते आबाई खिते डडियाल नी पहचान है बरतानिया विच बर्मिंघम विच। अल्लाह ताला काउंसलर वसीम जफर की लंबी उम्र दा, लंबी इज्जत दा, बड़ी इज्जत दा और एक खूबसूरत फैमिली नाल डडियाल नाल तल्लक और साडे वतन रियासत जम्मू कश्मीर ने बेटे साडे एम्बेसिडर इत्थे बरतानिया च। काउंसलर वसीम जफर साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत मेहरबानी और बड़ी मेहरबानी, तुसां काफ़ी अच्छे अल्फाज याद किया हुआ है और असा क्या दावत दी है। शुक्रिया काशिफ भाई साहब। थैंक यू। तो दोस्तों अज ने जो प्रोग्राम है वो जिस तरह मैं गुजारिश की सी इसकी तो शेयर कर सो अपने ज़्यादा वॉल्स पर और बिलखसूस जो बरतानिया विच दोस्त अहबाब तकने पे मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ पेजेस पर एक तो दूर ज़्यादा शेयर कर सो ताकि पता लगे बाकी दोस्तों की भी असा कैसने पर गल करने पे। काउंसलर वसीम जफर साहब जेडे ने जेड़ा साढ़े वास्ते आसानी पैदा की है या करसन जेड़ा कि डॉक्टर जस्टिन जेडे ओ जेकी गल करसन उन्होंने थोड़ा बहुत तर्जमा जरा मैं भी कर सकूं कोशिश और काउंसलर वसीम साहब भी कोशिश कर सकन कि असा की ज्यादा मालूमात हो बिलखसूस वो लोग जेडे कि अंग्रेजी जेडी है उन्होंने वास्ते नॉट ए फर्स्ट लैंग्वेज। Dr. Justin, I start from yourself. And first of all, I'm really pleased and very delighted. It's absolutely pleasure to have you in my show. Because currently we are facing a huge challenge in our community and you know in whole country as well. Can I begin by starting by saying that can you tell us what is coronavirus? What is actually, so we know basic things about it? Sure. So the coronavirus family is a family of viruses that can cause illnesses in animals or in humans. And in humans, there are lots of different types of coronaviruses. Some of them cause things like the common cold. Some have caused outbreaks like SARS or MERS, which were both part of the coronavirus family. And the type of coronavirus going round at the moment is a variety called COVID-19. And it causes severe respiratory lung problems, particularly. And that's what we're most worried about at the moment. Right. So, Councillor Wasim, can I basically say or ask कि ये दसो कि असानी कम्यूनिटी जी है साड़ी लोकल अपनी जी कम्यूनिटी है पहाड़ी या मीरपुरी जबान बोलने वाले पटवारी बोलने वाले जेडे उन्हें की बिकॉज यू वर्क इन पब्लिक ऑफिस यू गो अराउंड विद पीपल यू नो इंटरेक्ट विद पीपल उन्हें की कोरोना वायरस ने हवाले नाल जी अवेयरनेस है तुसा क्या फील करने हो कि ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है या असा जड़ा फील करने कि यू फील कंफर्टेबल के असा की पता है हुन जड़ा पता लगी गया
और मजीद इसमें अवेयरनेस देने की जरूरत है। देखो शुरू विच ते बहुत कम अवेयरनेस सी और अफसोस होना सी कि बंदे इसकी मजाक समझने सन कितनी सीरियस बीमारी जेह्ड़ी असां की पूरी दुनिया विच फैली रही है, बड़ी तेजी नाल फैली रही है। कोई लोग पहले मजाक समझदे सन, लेकिन पिछले चंद हफ्तेआं विच बिलखसूस जिस वेले ने बरतानिया दी हुकूमत ने लॉकडाउन इत्थे यूके विच कीता हुआ है, उसलै लोकां की ज़्यादा एहसास होया हुआ है और इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा उनें पुज्जी गई है। लेकिन और इन्हां विच काफ़ी मसलन के अदारियां दा भी बड़ा रोल है और तुसां ने चैनल और इस तरह दे सोशल मीडिया जेह्ड़ी एक्टिविज़म और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी बहुत बड़ा रोल है इंफॉर्मेशन की पहुंचाने ते। इस्सा वजह नाल अज असां भी तुसां ने रिक्वेस्ट कीती सी, गुजारिश कीती सी और मेहरबानी तुसां ने कि तुसां अज असां की अपनी प्लेटफॉर्म ने ज़रिए ये मैसेज पहुंचाने दा असें मौका दित्ता। देखें कि असां काफ़ी कम करी रहे हैं एज अ काउंसल, मुख्तलिफ इदारे, हेल्थ इदारे, NHS ट्रस्ट और गवर्नमेंट के कि क्या वजह है कि कई कम्युनिटियों की कोई शायद ज़्यादा कोई प्रॉब्लम इस नहीं पैनी पी है। एक जरा इशू अचना पिया है कि जिन्होंने लैंग्वेज इंग्लिश नहीं, जिन्होंने ज़बान पहली ज़बान इंग्लिश नहीं है कि शायद उन्होंने इंफॉर्मेशन उस तरीके नाल नहीं पुजना पिया। और तको प्राइम मिनिस्टर आर घरा विच खत भेजिया हुआ है, पूरी इंग्लैंड विच बड़ा खर्चा आया, करोड़ों ने हिसाब खर्चा आया और वो बहुत अच्छा एक इकदाम सी गवर्नमेंट की तरफों इंफॉर्मेशन पहुंचाने वास्ते। लेकिन जिन्हां लोगों की इंग्लिश नहीं पढ़न होनी, उन्हां वास्ते तो बड़े मतलब कि उस खत का कोई फायदा नहीं सी। सो तुसां ना इस क्वेश्चन का जवाब देना कि पहले तो काफ़ी लोग आगाह होई गए न, लेकिन मैं समझना कि अग्गें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इंफॉर्मेशन असां पहुंचाने दी और बिलखसूस जेह्ड़ा माह रमज़ान दा महीना आई गया, ये अज शुरू होया वा, सारे की रमज़ानी मुबारखां भी होन। इत्थै असां की थोड़ा जा ज़्यादा एहतियात करनी पैसी। कई बंदे सोचने पे मौसम ठीक होई गया, गवर्नमेंट आखनी भी असां पीक पर पुज्जी गए आं, हाइट पर पुज्जी गए आं ते अग्गें आसान होई गया। बिल्कुल नहीं, अग्गें चंद हफ्ते असां की होर जिस तरीके नाल पिछले ध्याड़ियां विच असां पूरे लॉकडाउन विच एहतियात करने आं, बाहर ना जाने आं अनलेस कोई इमरजेंसी होवै। इस तरह ते असां की चंद हफ्ते होर इस तरह ते रहना पैसे और इस रमज़ान विच ना असां मस्जिद विच जाई सकने नमाज पढ़ने ते, ना तरावी पढ़ने ते, इफ्तारियां और सहरियां भी अपने घरां विच करनियां पैसन। बहुत मुश्किल वक्त असां वास्ते गुजरी जा, लेकिन इस कोरोना वायरस नाल जंग लड़ने वास्ते असां की ये इकदाम उठाने पैसन, कोशिश करनी पैसी, मेहनत करनी पैसी, हर एक दूए की हिदायत देनी पैसी, बड़े निक्के सारे की मुतफिका होई ते इस तरह जेह्ड़ी गवर्नमेंट और जेह्ड़े इदारे असां को रिक्वेस्ट करने पे उसने असां की रिस्पेक्ट करनी पैसी और इस रमज़ान विच बिलखसूस असां की कोशिश करनी चाहिए है कि इबादत करो, घर करो बेहिता, फैमिली नाल बेहिता इबादत करो और दुआ करो कि अल्लाह ताला असें की हिम्मत देन कि इस कोरोना वायरस नाल असां मुकाबला करी सकन। Amin. Thank you. दोस्त अहबाब जेह्ड़े तकनीन पे, whoever's watching, if you have any question, any comment you like to make, and if you have any suggestion, please do let us know. Uh, people start commenting as well. They just said Amin to you as well. Thank you, brother Muhammad Khan. Thank you very much. And anybody else? There are a number of other people watching as well. If you have any question, please do let us know. Dr. Justin, next question will be, which is for my own knowledge as well, how does this coronavirus basically spread, across the other people, across the other community, or across the country? Because obviously, most people want to know. So the coronavirus spreads in the small droplets that we cough or sneeze out of our mouth, and those droplets either landing on a door handle or an object which we then touch, and then we get the virus on our hands and we touch our face, and the virus gets across our face into our mouth, up into our nose or into our eyes. And the virus then can get into our body and grows and makes us very unwell. But it is because of when we go out and we mingle with each other, we're exposed to those droplets that we might go from our mouths onto something that we touch. And then it's the not washing our hands properly that is the risk of the virus spreading when we touch our face. And that's how it gets into our bodies. So now the next question will be, how can we fight with it? How can we prevent ourselves? That's a really important point, I think, because now we establish that how it spread, but the next thing we need to find, obviously, how can we prevent ourselves?
So there are several things that we can do. So first is to stay at home as much as possible. If we stay in the houses in which we live, with the people we live with, and only go out for short periods of exercise or to do essential shopping, or if we're doing essential work, if we work in social work or as a nurse or a doctor, for example. But otherwise, to stay at home reduces our risk of coming into contact with someone else. We must wash our hands more frequently. That is really important. The germ gets into our bodies by our hands touching our faces. So washing our hands when we come into the house, washing our hands before we touch our faces is important. And if we do have symptoms, a cough or a high temperature, then we must stay at home, and everyone in the house must stay at home. And we must make sure we use a tissue to catch the virus if we cough or sneeze, and that must go straight into a bin in order to kill the virus and not spread it. So those are important things to help you stop catching the virus and stop you spread the virus. The other is it is important to look after your own health and make sure that you are as healthy as you can be, so that if you do catch the virus, you are in the best health to be able to fight it. Thank you, Dr. Justin. Wasim Zafar Saab. Now, जिस तरह spread होना है, असां ने अपनी जिहड़ी कम्यूनिटी है, मैं पढ़ना सपिया एक रिसर्च पेपर, उसने विच ये दस्या गया कि असां जिहड़े एशियन कम्यूनिटी और बिलखसूस स्पेशली जिहड़े मुसलमान कम्यूनिटी, असां मोर वनरेबल हां. वी आर इन मोर चैलेंज फेसिंग इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जांपल, साडी जिहड़ी सोसाइटी है, असां उसने विच बड़ा मिक्स होने आ. कॉमनली असां चीज़ां इस्तेमाल करने आ, कॉमनली घरां विच रहने आ. तुसां क्या सोचने हो कि ये वाकई सही है कि असां जेह्ड़ा हाईली रिस्क हां इसने अग्गे? देखो, जैसा डॉक्टर साहब ने दस्या कि ये बीमारी एक बंदे तो दूए बंदे जानी है. असां जिसलै खंघने आ या असां निच मारने आ या सींड असां ने कुदरै कुसै प्लेटफॉर्म पर कोई टेबला पर डायरेक्ट भी ना बंदे जाए, कुसै टेबला पर लगा जाए, कुसै वॉशरूम च कुसै फैसिलिटी च लगा जाए, तो दूसरा बंदा अच्छी उसी हत्थ लै और फिर उसने अपने मुंह के हत्थ लै, नक्का गी हत्थ लै, अक्खां गी हत्थ लै, ते इस तरह ते बीमारी फैलनी है. ते जिस तरह तुसें दस्सेआ कश भाई कि असां ना एक सिस्टम है, कल्चर है कि असां मुख्तलिफ जनरेशंस इक घरै विच रैह्ने आं. असां गी एह् आदत है कि अपने वालदेन और वालदेन अपने दादे दादियां नाने नानियां इन्हां दी कोशिश असां दी होनी है कि असां इन्हां गी इन्हां लुक आफ्टर करा. एक असां दा रिवायती कल्चरल एस्पेक्ट है और अच्छा एस्पेक्ट है कि असां अपने बड़े वडेरियां दी हमेशा खिदमत करने आं. और केईं बारी इस तरह होना कि 3 या 4 जनरेशन इक घरै विच रैह्ने आं. अस अक्सर बड़े घरां विच रैह्ने आं, बड़ियां फैमिलियां कट्ठियां रैह्नियां न. असां जिसलै कोई खाना किसे ने पकाने, असां 1-2 बंदे नाल पकाने, असां 20-25 बंदे नाल असां खाना पकाने. असां नी जेह्ड़ा एक्सटेंडेड फैमिली कल्चर है, असां दा कुंबा कबीले ने जेह्ड़ा सिस्टम है, एक अच्छा सिस्टम है. इसने विच असां एक दूए नाल असां प्यार और मुहब्बत करने आं. लेकिन एह् एक दूए नाल मिलना ज़्यादा है. असां नमाज पढ़ने आं ते जिसलै जुम्मे दी नमाज होनी, हज़ारां दी तदाद होनी, ते अक्सर जेह्ड़ियां 5 नमाज़ां होनियां न, उन्हां विच हर मस्जिद च पढ़ियां होनियां न. असां एक दूए नाल इंटरेक्शन रखने आं, असां मिलने आं ते कई बंदे ते दूरों सलाम देने, असां पंजां ते जफ्फी भी लाने आं. एह् भी असां दा कल्चर है. लेकिन इसने विच वल्नरेबिलिटी इस बीमारी की फैलने ने वधनी है. तो लिहाजा ऐतकी असें गी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिदी है. जैसे डॉक्टर जस्टिन ने आखेआ कि जिसलै कुसै इक घरै विच किसै बंदे गी किश अलामात आई जान, कोई उ'नें गी खांसी ने कोई प्रॉब्लम होऐ, बुखार होई जाए, ते उ'नें गी निं सिर्फ घर रहना पैसी, उ'नें दी तमाम फैमिली जेह्ड़ी उस घरै विच रैह्ने, जेह्ड़े लोक उस घरै च रैह्ने, उ'नें गी घर रहना पैसी. क्योंकि थ्रेट है कि एह् बाह्र जाई ते तुस कुसै होर गी मिली कम्मै पर जासो या किधरै होर किधरै कुसै नाल सोशल इंटरेक्शन होसी ते एह् बीमारी फैली सकदी है. सो इस बीमारी गी जेह्ड़ा लॉकडाउन भी होया, सिर्फ इत्थै निं पूरी दुनिया विच इस हाल ही है. लॉकडाउन ही है और एक दूए सोशल डिस्टेंसिंग ही है कि इस बीमारी गी रोकेआ जाए, ताकि हेल्थ जेह्ड़ी सिस्टम है असां नी जिसलै ओह् बंदे जान, ओह् एह् बोझ चली सकै कि इतने बंदे कट्ठे बीमार हो. जे मसलन कि अद्धा बरतानिया कट्ठे बीमार होई गया ते अस्पतालां दी बेडां क्या उत्थै अस्पताल दी जगह ही कोई नहीं होनी है किसै वास्ते. सो लिहाजा इसकी स्लो करने दा होर मकसद सी. True. Justin, obviously, what Wasim saying and what you're saying, basically, we need to be more careful within the,
we need to maintain our personal hygiene, we need to maintain our home cleanness, we need to do more deep cleanness and everything. That's fine, but just about this coronavirus, when is the vaccine likely to be coming out in public sector for the public, basically? So there is across the world many companies working together to try and develop a vaccine. Ultimately, until we have a vaccine, we will not go back to normal, because this virus is too dangerous, and particularly for older people or people who have existing health conditions, it can be very serious. Vaccines normally take about 2 years to develop. With all the effort that is being put in, trials are starting now. And we have to remember this virus only appeared in December in China. So this is really very quick. But I do not expect we would see a vaccine available until probably the end of the year, until December, possibly January, unless we are very lucky. So, Brother Wasim, if you can translate that in our own. तुसां कश भाई ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਆਈ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੂਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਈ ਰਿਹਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਤੇ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਦਵਾਈ ਲੋੜਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਣੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਉਸਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋalition ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੇ क्योंकि बड़ा रिस्क होना वा नवी वैक्सीन का। लेकिन कल मैं टीवी पर देखी रहा सा कि कल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जी वैक्सीन जी तैयार करी रही और टेस्ट कर वो बंदियां विच टेस्टिंग शुरू हो गई है। ज़ाहिर बात है वो काफ़ी टाइम लग सी उसने रिजल्ट लिखने के, महीने बाद उस बंदे क्या असर पैना, दूए महीने बाद क्या असर पैना। गवर्नमेंट ने जी ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि उन्हें की उम्मीद है कि बहुत जल्दी होया तो सितंबर तक शायद ये भी ना मैं आखना कंक्रीट शायद कि कोई वैक्सीन आई जाए। दुनिया विच और भी इंडिया विच काफी कम हो रहा, चाइना विच काफी कम हो रहा, अमेरिका विच हो रहा, यूरोप विच हो रहा, इटली ने भी साइंटिस्ट बहुत ज्यादा कम करने पे। उम्मीद है कि जल्दी कोई वैक्सीन आई जैसी, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं है, हफ्तियां नहीं गेम नहीं है, ये महीनियां नहीं गेम है। तो कुछ लोग तो आने के 18 महीने भी लगी सकने। और जब तक वो वैक्सीन ना आई सी असां की अपनी लाइफ जिस तरह प्री 2019 जिस तरह खत्म किया सी, जिस तरीके ना साना सिस्टम सी जिस टुरने फिरने सा, जब तक वैक्सीन ना आई सी असां उस सिस्टम वापस ना जाए। शायद कई बंदे तो आने कि उत्था तो वापस जाना ही ना, कि थोड़ी बहुत चेंजिंग लाइफ विच तकरीबन आई गई है, लेकिन एक काफी टाइम लगी सकना है। और लेकिन काफी कम हो रहा है। तसल्ली की गल है कि बहुत हाई लेवल पर कम हो रहा है। बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जी टीम है उत्थे मैं पिछले दिनों में किते सोशल मीडिया तक है कि उन्होंने एक टीम विच असने अपने डडियाल ने एक बेटी भी लथी नहीं शायद वो उस टीम विच शामिल है और कम करी रही है। आई थिंक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर को उस टीम विच हिस्सा करी रही है, बहुत अहम हिस्सा करी रही है। और खुशी की गल है कि असने लोग भी इस कम में शामिल हुए हैं। असा वसीम भाई असा उन्हें की ट्राई की है अप्रोच करने नी, और होपफुली वंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली शी वर्क्स एज अ टीम, जिस वक्त उन्हें की इजाजत लभी था वो अच्छा नहीं था प्रोग्राम विच भी, एंड देन असा एक गठिया प्रोग्राम करसा। बेसिकली इट इज गोना बी आवर ओन लैंग्वेज इज वेल एज सेम एज इंग्लिश। तो मैं उसने कोशिश करसा कि पता लगा कि असन लोगों की जी होप है, उम्मीद है, या कुछ जियां प्रोग्रेस हुई है उसने बारे भी पता लगा है। सो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। Justin, when is the lockdown likely to be lifted? That's the question, and that's the answer we all want to know. You might know.
Yeah, no, it's the question I get asked most. And if I had an answer and I was a gambling man, I would be very rich by now. Wow. Or I would be certainly rich in a couple of months. The lockdown will be released around the world at different stages, and that's because it is dependent. It depends on how the infection is spreading in a country and how rapidly it is spreading. So all of the things that we are doing to stop people leaving the houses they live in are designed to try and reduce the spread of the infection to ensure the health service can cope. Certainly in Birmingham, my view is that we will be unlikely to see relaxation of lockdown until the end of May, potentially into the beginning of June. And when relaxation of lockdown does come, it will be very, very small steps, because the risk is if we open the door too quickly and we all rush to see our family and our friends, that we will suddenly get many, many new cases and a second peak, and many people will die that did not need to die if we were more cautious. So I think probably the end of May, beginning of June, but likely to be very, very small steps. And it will be, I'm afraid, a long time before we will be able to gather in large numbers, whether at mosque or in theatres or to watch football matches. It will be a long time before that is safe to happen, and probably not until we get the vaccine. ਭਾਈ ਵਸੀਮ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਵੜਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਬਈ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਡਾਲ ਵਿੱਚ, ਟੁਰਨੇ ਫਿਰਨੇ ਵਿੱਚ, ਬਹਿਣੇ ਖਲਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਈ ਸੀ। ਤਬਦੀਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ एकदम ना करी सका जिस तरह असां पहले करने सा। मैं ठीक समझा भाई वसीम या मजीद बिल्कुल ठीक तरीके ਨਾਲ ਬਾਸੋ? जैसा डॉक्टर साहब ने दस्या वा कि इस वेले जी इत्थे ब्रिटानिया विच लॉकडाउन है, गवर्नमेंट 7 मई तक उन्हां ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਨੇ 7 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਹ ਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਣਾ ਕਿ 7 ਮਈ ਉਹ ਆਖਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਣੇ ਸੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਦ ਅਦਾਰੇ ਉਹ ਖੋਲੀ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਲੋਕਲ ਇਕਾਨਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਰਿਸਕ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ। मैं फुटबॉल अक्सर तकने जाना, मैं इत्थे लोकल क्लब ना सीजन टिकट होल्डर में 40,000 बंदा उत्थे इत्थे इकट्ठा होना। बड़े-बड़े इस तो भी बड़े-बड़े ग्राउंड्स हैं। ये गल्लां जेहड़ियां बड़े-बड़े ग्राउंडां विच बंदे इकट्ठे होण, म्यूजिक शोज़ होण या असां मस्जिदां विच या गुरुद्वारे विच या चर्चां विच जाई ते इकट्ठे होसां बड़ी लेवल विच। ये जब तक वैक्सीन ना आई सी और वो हर बंदे की ना पुजसी, वो बड़ा लो चांस है कि इस तरीके ने असली लाइफ वापस आई सी। सो ये निक्कियां छोटे-छोटे स्टेप्स विच ये लॉकडाउन खुलने ना दसने न, क्योंकि इस वेले असां पीक तो गुजरने पे आवां और जेह्ड़ी हॉस्पिटल एडमिशन्स न वो कम होनियां पियां न। लिहाजा जेह्ड़े बंदे अजकल फोत होने पे ओह् अस्पताल 3-4 हफ्ते पैह्ले गए सन, वो उन्हां दी डेथ होनी पई। सो असां बेहतरी दी तरफ जाई रहे आं, लेकिन इतनी भी नहीं बेहतरी कि असां रातों रात सारे कम खुली जासन ते दुकानां खुलसन, मस्जिदां खुलसन, स्कूल खुलसन, कॉलेजां खुलसन, फैक्ट्रियां खुली जासन। इतना नहीं होना है, आस्ता-आस्ता ना स्टेप्स होसन और बड़ी मेहनत नाल होसन कि ये ना होवे कि ये पीक गुजरी असां मसलन कि इस वेले 18,000 बंदा फोत होई गया ते असां ऐसे कोई कदम उठां कि दोबारा पीक होई जाए कि 18 to 20,000 बंदा और फोत होई जाए। We have to be very careful about that. Justin, so the question will be, is this virus or corona, whatever we can call COVID-19, is he impacting one community more than to other community, or is it, equally treating to everyone? So there's a lot of research going on about that at the moment, both in Birmingham and nationally in the UK. We've been looking at the data to try and understand it, and there's now enough people who have been sick with coronavirus to be able to get a bit more understanding.
one of the important things to understand is that when we look at that data, what we try and do is not just look at ethnicity, age, or gender. We also look at whether people have got long-term conditions like diabetes and high blood pressure as well. And when you put all of those factors together, then you tend to see that what's most important in terms of risk is being more elderly, so particularly people over the age of 80, and people who have got long-term conditions like high blood pressure and like type 2 diabetes. And we know that in many of our ethnic communities, diabetes and high blood pressure are more common. So particularly in many of our Pakistani, Indian, Kashmiri populations, for example, those conditions are more common. And so those communities are more represented. But this is more about the patterns of those health conditions than it is about people's ethnicity. But there is ongoing research, and it is still, I think, too early to say whether there are particular communities that are affected because of their ethnicity. But at the moment, the picture suggests it is more about people's existing health conditions, and some of those are not as well managed, perhaps, and not as well looked after in some of those communities, and that makes them more vulnerable to becoming sicker if they get coronavirus. Thank you. So वसीम ज़फर साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब बाणन के वाकई जिस तरह असां गल करने सां पे कि प्रॉब्लम जिहड़ी है कम्युनिटीज़ की भी है, अब अक्रॉस द बोर्ड सारियां की है, लेकिन माड़ी जिहड़ी समझ आओ ये है कि जिस तरह असां पहले गल करने सां कि असां जिहड़ी एशियन कम्युनिटी और बिलखुसूस असां मुसलमान अपने जिहड़े इत्थे कम्युनिटीज़ न, साढ़ा जिहड़ा रहन सहन दा तरीका है, मिसाल के तौर पर साढ़ा दुआ घर है, उत्थे साढ़े ताया होर भी रहने, मैं अपनी गल करना है, ताया होर रहने, उन्होंने पुत्र भी रहने, फिर अग्गे पोतरे भी रहने, ठीक है। यानी कि असां 3 जनरेशनां जिहड़ियां इक घरै ने को रहनियां, भावें 6-7 बेडरूमां होई जाए, लेकिन घर तां इक है ना, उसने विच सारे असां एक दूए नाल मिलने मिलाने आ, बहने आ, रोटी टूड़ा गठियां खाने आ, सब कुछ होना। अब दूसरा जिहड़ा साढ़ा आ कि असां जिस तुसां पहले फरमाया कि असां जिहड़ा मिलने आ जफ्फे तो बगैर तां असां रहने कोना, 5 तां सट्टां ही सट्टां, फिर इसने तो बाद असां घर हांडी जिहड़ी है सारेयां दी इकट्ठी होनी है, असां रकाबियां प्लेटां जिहड़ियां न ओह भी गठियां घर रखियां होनियां, सारे इकट्ठे बेत खाने, असां समझने कि इसने नाल वैसे भी असां ने घरां विच अच्छा समझा जाना कि सारे इकट्ठे बेत टूड़ा रोटी खां, ये भी अच्छी चीज़ है। नमाज पढ़ने आ, मसीती जाने आ, उत्थे भी मस्जिद च असां इकट्ठे होने आ, घर अगर नमाज पढ़ां तां भी एटलीस्ट जमात वास्ते असां की 2-3 बंदे तो चाहिए होने। सो इस सारे जिहड़े चैलेंज है, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमाया कि असां की इसकी मैनेज करना पेसी, क्या बाणे जी इस तरह मतलब है किस तरह मैनेज होसी, क्या कोई असां की अग्गे वधना पेसी किस तरीके नाल? वैसे एक असां वास्ते बहुत बड़ा इम्तिहान है, असां इस इम्तिहान तो असां गुजरी रहे हैं। जिस तरह दस्या अग्गे भी गल हुई है, असां एक कल्चर है, एक खूबसूरत कल्चर है, लेकिन ये जिहड़ी बीमारी है कोरोना वायरस, इसनी ये असां की ज़्यादा मुश्किलात तां पैदा असां वास्ते होने पे कि ये एक बंदे तो दूए बंदे ये अग्गे जानी है। ये डायरेक्ट भी नहीं जाई सकनी, लेकिन एक बंदे तो दूआ बंदा कोई निछ गुजरा टेबल पर करी ओड़ा या वॉश बेसिन करी ओड़ा तो दूआ बंदा जाई हत्थ लाए, उसकी ये प्रॉब्लम पैनी है। इस तो वधित है जिहड़ी ज़्यादा जिस डॉक्टर साहब ने दस्या कि अज डेटा कट्ठा होना पिया, नवीं बीमारी है, मुख्तलिफ अदारे चेक करने पैन कि इत्थे क्या पैटर्न्स क्या लिंक न। ज़ाहिर बात असां भी परेशान तकने आ कि हर त्रीए ध्याड़ा कोई ना कोई मुसलमान या एथनिक माइनॉरिटी डॉक्टर या नर्स फोत होनी है, हेडलाइन न्यूज़ होना है, तो असां ने लोकां विच ज़्यादा फोत होने पैन। और असां जिल्लै जदों भी फेसबुक खोलने आ, 2 हफ्ते पहले बिल्कुल जदों भी फेसबुक सवेला खोलना चाहता है, कोई ना कोई अपना वाकफ अल्लाह ना प्यारा होई जाना सी इस बीमारी दी वजह नाल, परेशानी होनी है इस वजह नाल। लेकिन एक की पैटर्न जिहड़ा अचना पिया, एक तो है कि उम्र ज़्यादा होवे, जिन्हां बंदे दी उम्र ज़्यादा होवे, ज़ाहिर बात उम्र ज़्यादा होवे, कमज़ोर होना बंदा, वो जिहड़े बीमारी लगनी है वो फाइट नहीं करी सकने, उन्होंने अंदर जिस्म फाइट नहीं करी सकना। दूसरी गल है कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, ये हर त्रीए बंदे विच है। मैं तुसें दस्सां, मैं खुद टाइप 2 डायबिटिक हां काफ़ी अरसे नाल, जो हमारी उम्र 40 साल भी नहीं हुई है। असां दी कम्युनिटी विच टाइप 2 डायबिटीज ये बहुत बड़ा इश्यू है, और हाई ब्लड प्रेशर। और जिहड़ा एक पैटर्न सामने अचना पिया, जिहड़ी अर्ली साइंस ने कि जिन्हां बंदे की हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज है, वो ज़्यादा वल्नरेबल ने इस बीमारी में।
तो वो असानी कम्युनिटी असेंगी पता है गया कि साउथ एशियन कम्युनिटी जिहड़ी है इंडियन पाकिस्तानी कश्मीरी बांग्लादेशी उन्हां विच ज़्यादा बीमारी होनी है क्योंकि असां खान पीन भी ऐसा है कि फ्राइड फूड ज़्यादा चलना, फास्ट फूड ज़्यादा चलना, फिर एक्सरसाइज भी जिस तरह करनी चाहिए है वो नहीं होनी है। ये फिर ये प्रॉब्लम जो असानी कम्युनिटी में ज़्यादा है और इस बीमारी तो ये वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। सो असां की ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि एक्सरसाइज थोड़ी जी करा गवर्नमेंट इजाजत देनी है कि कोई बाहर चो जाओ तो उन्होंने रिकमेंडेशन है कि 10,000 स्टेप्स रोजा नहीं करो जो आजकल आईफोन और वगैरह फोन जो नो सो कि ट्रैक करी देने के कितने सो की एक्सरसाइज जरूरी है दुआ खान पीन पर थोड़ा कंट्रोल करो कि अपनी शुगर कंट्रोल करो और एक और अहम गल मैं काशिफ साहब आखना चाहना रोजियाना महीना आई गया मिकी मैं एक और रोल भी मेरा है काउंसिल तो अलावा मैं एक हॉस्पिटल ਦਾ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हां ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ रमजान ने पहले ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਖਲ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੋਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂ नेक लोग ने कोशिश करने लेकिन इस्लाम भी ये इजाजत दे रहा है कि कोई बंदा बीमार हुआ है उसकी एक ऐसी कंडीशन हुआ है कि रोजा रखना वो भी 17-18 घंटे ने आजकल गर्मियों ने रोजे नहीं था यूके विच उनकी इजाजत दे रहा है कि तुसा कोई चैरिटी विच डोनेशन करी ओड़ो तुसा सदका देई ओड़ो लेकिन तुसा रोजा ना रखो क्योंकि और खास तौर इन्हां दिहाड़ियां विच तुसा टाइप 2 डायबिटिक हो तुसा रोजा रखी तो अस्पताल दाखल होई जो सेहत खराब होएगी अगे ही कोरोना वायरस दा रौला पिया ते थोड़ी जी असें जाहिर है की एहतियात करनी नाली साहब एहतियात करनी मजहब पड़ेगी जड़ा है बड़ा खूबसूरत मजहब है अल्हम्दुलिल्लाह और असां बड़ी खुशकिस्मत हां अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने विच कंसेशंस दियां एग्जेम्पशन दियां बिल्कुल उसने विच जड़ा है असां की बीमार हो प्रेग्नेंट है कोई औरत है कोई बच्चा है जड़ा या बच्ची जेड़ी अडल्ट एज विच नहीं है इसने तो अलावा बेशुमार बीमारी दी हालत है टीके लगने इंजेक्शन वगैरह लगने तो अल्लाह ने बड़ा शुक्र है असां ने इस मजहब पर कि असां की कम से कम आजादी है कि पिछे हटी जाओ मुड़ी जड़ा या फिर रखी कि जिले सेहतमंद हो सो ठीक हो जासो फिर इसने तो अलावा कुफारा अदा करी कि नो ये सारियां चीज़ां मौजूद ही तो असां जी जी की बिल्कुल यकीनी तौर पर जड़ा या इसने पर अगले प्रोग्राम विच किसे बड़े आलम दीन जेड़े उन्हां की आन सा वो भी असां की रहनुमाई करसन इंशाल्लाह इंशाअल्लाह कि असां इस हवाले नाल क्या करां Dr. Justin, the question to you next will be what is the short, medium, and long term goals to defeat this coronavirus? So the goal, the fundamental goal, is to save lives. Everything that we are doing in the city of Birmingham, in the UK, and in many countries across the world is focused on two things. One, that we will save as many lives as possible, and two, that we will ensure the future of society, and that's to ensure that people have jobs to go back to, and that the city continues to move forward. So those are the two things that we're focused on. In terms of the what we're doing at the moment with lockdown, this is about trying to ensure that the NHS, the health service, does not get overwhelmed by trying to slow the spread of the virus. As we start, and that seems to be working, but it's still early days. Then as we release lockdown slowly, the idea is then to manage the spread of the virus so that the health service can still cope and that we don't see the large numbers of death rise. In the long term, when we have the vaccine, that will stop the spread of the virus because it will mean that the virus hasn't got anyone new to infect. So in the short term, we are about trying to make sure that the virus spread is reduced so the health service can cope. In the medium term, it's about managing that spread and helping to protect people as much as possible. And then in the long term, it's about stopping the virus spreading once we have a vaccine. So, thank you, Dr. Justin. So, वसीम साहब जिस तरह डॉक्टर साहब फरमाया या दसने पे कि जेडे साढ़े शॉर्ट टर्म मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्स जेडे ने इसकी शिकस्त देने या इसमें तू बचने वास्ते और अपने आप की बचाने वास्ते है जिस तरह वो दसी रहे इनके इस तरह करना पेसी तुसा क्या थिंक करने हो डॉक्टर साहब ने इस हवाले नाल पॉइंट ऑफ व्यू नाल
जी, मैं बिल्कुल इतफाक करना वा जो डॉक्टर साहब आया कि असां जेह्ड़ा इस वेले जिस वक़्त गुज़री रहे हां कि इस स्प्रेड गी कंट्रोल करना, सोशल डिस्टेंसिंग और जेह्ड़ा लॉकडाउन एह् ऐ कि एह् इ'यै ऐ कि इक एह् बीमारी जेह्ड़ी फैलनी पई ऐ बहुत जल्दी ना फैलनी पई सी इसदी रुकावट बनी जाए। और इसदा एह् अहम रोल सी कि अस्पताल जेह्ड़े यूके विच न और जेह्ड़ी साढ़ी नेशनल हेल्थ सर्विस ऐ एह् बहुत चली सकै। जे मैं जिस तरह मैं अग्गें दस्सेआ सी कि जे रोज़ा नाल मसां के लक्खां दी तादाद विच लोग बीमार होने सन ते सारे अस्पताल जाने ठी तां हुन एह् नहीं सी कंट्रोल होना और इक दौर ऐसा भी आया इक तकरीबन महीना पैह्लें जेह्ड़े असले अस्पताल अक्सर एह् नहीं सन एह् बोझ संभाली सकने हुन असें बड़े मुश्कलात होई गे सन। वेंटिलेटरां दी कमी सी, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई दी कमी सी। और एनएचएस नहीं हैंडल करी सकी। नमें अस्पताल भी खुल्ले गए, लंडन खुल्लेआ गया, इत्थै बर्मिंघम खुल्लेआ गया और ओह् खुलने विच भी थोड़ा जेहा टाइम लगी गया। लेकिन एनएचएस गी महफूज रखने विच सब तो अहम गल्ल जेह्ड़ी ओह् आखदे घर रवो, इक दूए तो दूर रवो, इसकी रुकावट बनाओ इस बीमारी ना फैलने नी, एह् इक अहम चीज सी। लॉन्ग टर्म ज़ाहिर बात है जब तक वैक्सीन ना आई सी एह् एक किस्म दी इक परसैप्शन भी होनी है। लोकां दे दमागां विच भी और दिला विच भी एह् गल्ल पेई गेई कि काफ़ी मुश्किल बीमारी है। मैं माड़ी ज़िंदगी विच इ'यै जेही कदें मैं इस इ'यै जेही लाइफस्टाइल च मैं ना गुज़रेआ इक बड़ा अजीब जेहा सनारियो रेहा ते आइंदा इत्थै बुक्कां भी लिखन होसन इन्ना 2-4 म्हीनेआं दे बारे च फिल्मां भी बनसन क्योंकि इक अजीब सिस्टम विच असां गुज़री रेआ जेह्ड़ा अस सोची ना सकने सां कि इ'यै जेहा कदें होसी। लेकिन जब तक उसदी दवाई ना आई सी, उस वेले तक सारें गी तसल्ली नहीं होनी। लेकिन इसदे विच कुछ फायदे भी होए न। में तुसें दस्सना कि मैं बहुत कम बाह्र जाना, लेकिन में तमाम जेह्ड़े अपने माड़ी ज़िम्मेदारी है जेह्ड़ी काउंसल विच, मैं लैपटाप पर बैठियै कांफ्रेंस कॉल, वीडियो कॉल पर अस कम्म करी रेहा और एह् कि एक नवीं सिस्टम इक आई है कि रिमोट वर्किंग भी होई रही है और मज़ीद होर भी फायदे इसने विच लिख सन। हाँ, मुश्किलात ज़्यादा न, लेकिन इस दौर विच काफ़ी असां की असेसमेंट भी होई है। दूसरी गल्ल एह् है कि असें गी एह् भी एहसास होया है कि केह्ड़ियां-केह्ड़ियां चीज़ां अस मिस करने आं। केह्ड़े-केह्ड़े दोस्तां नाल असां नी इतनी मुहब्बत है कि उ'नें तक्की ना सकने। जनाज़ियां ने भी मैं अग्गें इक दोस्त नाल गल्ल करी सा कि इतनी बड़ियां हस्तियां फौत होइयां न, बड़े-बड़े जनाज़े होन और उ'नें बेचारेआं गी इत्थै चंद लोग सिर्फ उन्होंने करीबी अजीज जेह्ड़े उन्हें जनाजे जाई सके सो काफ़ी मुश्किलात भी होए न, लेकिन कुछ अग्गें इंशाअल्लाह फ़ायदा होई सी लेकिन जब तक वैक्सीन ना आई सी ना, इसी लॉन्ग टर्म लड़ाई इस बीमारी नाल नहीं होनी। So, Wasim Sab, kuch comments, we'll include some comments as well. Let's see जी, if जी, बिल्कुल। we have something. So, uh, Councillor Wasim, Muhammad Khan is saying that can City Council play any role to celebrate Ramadan and Eid in the same day, sir? Something out of interest, out of program, but let's see your views are because we've got variety of views coming, sir. राज साहब ने बड़ी मेहरबानी है इन्हां बहुत ज़रूरी एक सवाल पुच्छेआ और अफसोस होना वा जी हकीकत बात है कि घरां-घरां विच कुछ लोकां अज रोज़ा रखेआ, कुछ कल रखसन, एह् तकसीम होई दी कम्युनिटी और इस मुश्किल वक़्त विच एह् अफसोसनाक चीज़ है असां दी कम्युनिटी आस्तै। देखो असीं इक सियासी लोक आं, जेह्ड़े असां कौंसलर आं, सियासी आं, एह् कौंसल इक पब्लिक अदारा वा इन्हां ना मज़हब नाल इंटरफेयर करना इक असां दा रोल नहीं बनना। असीं ना आलिम आं असां ना इक सियासी कारकुन आं, असां इक हाँ, सियासत विच असां शायद कुछ संगी असां दे एक्सपर्ट भी होसन। मेन चीज़ एह् है कि असां अपने जेह्ड़े उलमा इकराम न उ'नें गी किट्ठा कीता जाए और कोई थोड़ी जेही पिछले चंद साल पैह्लें काफ़ी बेहतर हालात होई गे सन, लेकिन अजकी थोड़ा जेहा अफसोस होया वा कि इक चीज़ जेह्ड़ी साइंटिफिकली जेह्ड़ा फैसला होना वा एह् किसे दी राय नहीं होनी चाहिदी। एह् साइंस दे मुताबिक असां दा मज़हब है ते एह् मैं समझना कि बड़े-बड़े लोकां दा शायद मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन जेह्ड़ी मस्जिदां दा सब तो बड़ा जेह्ड़ा अम्ब्रेला ऑर्गनाइजेशन है उन्हां दा रोल होना चाहिदा इत्थै बरतानिया विच। वर्ल्ड मुस्लिम लीग है, होर भी बड़े-बड़े अदारे न। सो राज साहब मैं माज़रत चाह्ना लेकिन एह् हमेशा कि बर्मिंघम सिटी काउंसिल तो एह् वधी दा कम्म है। असां जेह्ड़ा रोल असां अदा करी सकने आं ज़रूर करी सकने एज़ अ लोकल लेवल लेकिन मैं समझना कि ईद ते रोज़े ना असां ने it'd be wrong for us to get involved. Thank you. Dr. Justin, that's the comment for you actually from Waqar Aslamkiani. This type of program help us to face certain problems regarding health. Obviously, it does help our community as well. Thank you, Waqar. Um, Basically, obviously, there are a lot of other people
they're commenting maybe somewhere else as well, because our comment section is only this one. But like I said, we are live on a number of different platforms. So I'm just trying to checking to if I can pick up any message or any comment or suggestion. But hopefully, I will keep checking it. Justin, so now this is really important question actually from community perspective. Can I ask what is the process to release dead bodies from the from the dead bodies? How can we release? What is the process at the moment? So there are some small changes in terms of the process for the body to be released. That's more around the number of people that are dying, which is significantly higher than at any other time we've had before. But as far as I know, certainly in Birmingham, that hasn't been a delay. There haven't been problems in storing bodies, and we have caught up with making sure the death certificates and the release papers are moving through swiftly. And extra staff have been brought in to help manage that. We've worked very closely with the mosques in the city and the funeral directors to work with them on the religious rites around the body after it's died, to minimize any potential risk. There are some risks from a body after someone has died, and that's really from the bodily fluids. And therefore, there is advice about what funeral director staff should wear when they are washing the body, for example. And we've advised them that that should only be done by trained staff. And there's been some excellent work by the funeral directors of Birmingham coming together to ensure that people are trained properly about wearing the right equipment, and that the religious leaders across the city have worked together to ensure that the dead can be honoured safely. But as we all, I think, know, the dead would want the living to carry on living, and to not put themselves at unnecessary risk, because their legacy lives through us, living on healthy and well. So वसीम साहब जिस तरह डॉक्टर साहब दसने पे, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सी भाई मोहम्मद खान साहब ने कमेंट्स ने नाल जुड़ी हुई जिहड़ी सी ओ मैं थिंक करना है, मैं महसूस करना है कि ऑब्वियसली मसाजिद विच जेड़ा आ रमजान हुन तक माशाल्लाह सारे ना स्टार्ट हो गया। एक जिहड़ी चीज असां की सीखनी चाहिए इसने तो पहले कि असां डॉक्टर साहब ने गल्ला पर अच्छा जिहड़ी सीखने वाली चीज है वो है कि सिख कम्युनिटी जिहड़ी है उन्हें अपनी बैसाखी जिहड़ी है वो ब्रॉडकास्ट कीती यानी वर्चुअल जिहड़ी है जिसके आने नहीं इंटरनेट पर जिसके असां अपनी जुबान च आने आ वही, और मुसीबतां जिहड़ियां साड़ियां वो भी ब्रॉडकास्ट करनियां पियां नमाज अपनी इसने नाल असां घर बेच ते पढ़ी सकने फैसिलिटी है साडे कोल। ते जेड़ा मैं थिंक करना है कि एक फैंटास्टिक आइडिया है। पहले इस बारे दसो कि आइडिया इसकी किस तरह से तकने हो। देखो मैं दाद देना चाहना वा कि जिस तरीके नाल मसाजिद इत्थे बर्मिंघम का पूरे यूके विच फ्यूनरल डायरेक्टर्स और कम्युनिटी दी लीडरशिप जिस तरह कम करी रहना और जिस मुतफिका तरीके नाल कम करी रहन कोरोना वायरस नाल जंग लड़ने दे, ये मैंने खाजी तहसीन पेश करना वा। हर मंडे सुबह 10 बजे और उन रमजान विच 1 तो 2 बजे जो डॉक्टर जस्टिन नाल और मुख्तलिफ सियासतदान भी उस पर बने, तमाम मस्जिद लीडर उत्थे बने, एक जूम कॉल होनी है, जूम एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग कॉल उत्थे होनी है और जिथे तमाम उत्थे डिस्कशन होनी है कि क्या किस तरह असां सपोर्ट करी सकने हैं, जेह्ड़े गवर्नमेंट ने एम्स ने, लोकल काउंसिल ने एम्स ने, NHS ने एम्स ने, और असां ने जेह्ड़े मजहब विच भी जेह्ड़े असां दी रिक्वायरमेंट्स बिलखसूस जिल्लै कोई डेथ होनी है असां एक दूए किस सपोर्ट करी सकने आं। इत्थे जिस तरीके नाल वॉलंटियर सामने आए, जिस तरीके नाल एक खौफ भी है सी कि कोरोना वायरस की जो एक बंदे दी डेथ भी इतनी जल्दी होई जानी है, इसने गुसल किस तरह दिता जा सी, दफन किस तरह कीते जा सन, लेकिन जिस तरीके नाल कम्युनिटी बाय एंड लार्ज एक दो शायद होन विच जिन्ना नहीं कोई मुश्किलात पैदा कीते, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं आना कि मुस्लिम कम्युनिटी जिस तरीके नाल अग्गे आई है और जिस तरीके नाल लीडरशिप दसी है, एक बहुत पॉजिटिव साइन है और इंशाल्लाह अग्गे भी और मामलात विच भी असां दी कम्युनिटी की इस तरह यूनाइटेड रहना चाहिए। वॉलंटियरिंग सिस्टम में तकना पिया, फूड बैंक्स, तमाम कम्युनिटीज और असां दी कम्युनिटी भी उसमें शामिल है। जिस तरीके ने
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ डिसेबल ने उन्हें की खाना भी पहुंचाना पैना है, उस मार्केटा ही नहीं जाई सकने। और जिस तरीके ने असाने दोस्त असाने भैणा भरा मुख्तलिफ कम्युनिटी ने लोग इकट्ठे आई तो उन्होंने मदद करने पैन, एक किस्म ना एक खूबसूरत नेचर एक सामने आई गया, द बेस्ट ऑफ बर्मिंघम, द बेस्ट ऑफ द यूके, एक बड़े मुश्किल हालात। सो जिस तरीके नाल असा नहीं था स्मॉल ईद पार्क बर्मिंघम विच ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਈਦ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਮਸਾਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੋਲੀ ਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਣੀ ਹੈ। तो असा की और तरीके नाल असा की सेलिब्रेट करने में, बल्कि आज मिगी ईमेल आया बिशप ऑफ बर्मिंघम जेड़ा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स ना भी रुकन है, वो अक्सर असा की इफ्तार वास्ते बुलाना होना है, मल्टी फेथ इफ्तार, उस हद की बिल्कुल असा की बुलाया, लेकिन उस आया कि मैं ऑनलाइन लिंक भेजसा, सारे अपना अपना खाना केड़ी इफ्तारी वक्त अपने अपने टेबल पर भेज दिया, सारी एक दूसरे गलबात होसी, दुख सुख एक दूसरे नाल करसा, और इस तरीके नाल अद के इफ्तार होसन। सो मुख्तलिफ कम्युनिकेशन, मैं हर रोज शामी मेरे दोस्त ने, कुछ काउंसलर ने, कुछ और साथी ने, उन्होंने बेहद असा वीडियो कॉल करने आ, हंसी मजाक करने आ, शुगल मेला लाने आ, ऑनलाइन सिस्टम बहुत बेहतर हो गया। बल्कि वसीम जफर साहब तुसां गल्ला की टोकना माजरत करना है, उल्टा क्या कहने ने होम पार्टीज समथिंग लाइक दैट, दिस इज गोइंग ऑन एवरीवेयर। माड़ियां अपनी नीसीज जेड़ियां पतरियां भनैयां वो सारे जनाब ग्रुप बनते आ, 10-12 बैठियां होनियां निक्कियां निक्कियां, ते मैं क्या बच्चों क्या करने हो है मामू इत्थे जड़ा अस हुण इत्थे गल्लां करने आ, ते मैं क्या क्या है मामू, दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ लाइफ नाउ, सो वी गोटा लिव विद इट। मैं दैट्स फाइन, we have to live with it. Of course, we want their safety and security and everything. Now, Justin, so now my last question. As you know, the ghusl for bodies, is he allowed? Yeah, so there is guidelines around the ghusl, the washing of the body, and the funeral directors have worked really hard to find ways to do this in a way that protects the individuals doing it, while also respecting the religious right. The guidance has changed and evolved. So at the beginning of the outbreak, we were saying don't do it because we didn't know how much risk there was from the dead body. Now there is better guidance and it's a much clearer message. But it is a different type of body washing. So funeral directors are not using a hose to wash the body. They're using a cloth. They're wearing gloves and aprons and face masks. And you only doing it with trained members of staff and volunteers. And this is all to reduce the risk of the disease spreading from the body. But it is also about reducing the risk from the other people in the room. And my understanding from what they have shared with me is in the past, family members might have been present and there might have been 4 or 6 people involved, perhaps. But that obviously those people can't be 2 meters apart over the body. It brings them too closely together. So it can be done safely, but we really are asking that is by people that are trained and have the right equipment. And certainly in Birmingham, I'm confident from all the hard work the funeral directors have done that that is the case. Thank you, Justin. Councillor Wasim, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੁਸਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਾ मुसलमान स्पैशली फोत होने तो गुसल देने और गुसल जेड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो डॉक्टर साहब जेड़ी माड़ी अंडरस्टैंडिंग है ये गल आखी है कि गुसल तो देना है, लेकिन इस वास्ते स्पेशल जेड़े ट्रेंड लोग जिन्हें की पता है SOP जेड़े इसने उन्हें क्यों पता होना चाहिए है और उसने तो बगैर जेड़ा है हाथ ना लान, ये ठीक आने क्या बात हो इस बारे च? बिल्कुल मैं तकिया कि इत्थे काफी मसाजिद ने बड़े आलम शेख जेह्ड़े खास तौर सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट कीती सी कि नौजवान बिल्कुल जेह्ड़े फिट जिन्हां दी सेहत ठीक है ना वो सामने अचन, क्योंकि एक फैमिली जेह्ड़ा डेथ होनी है कोरोना वायरस की वजह शायद वो बंदा घरा विच रेहा होवे तो बाकी फैमिली सोशल आइसोलेशन च होनी है। सो उन्होंने करीबी रिश्तेदार वो गुसल नहीं दे सकने, जेह्ड़ा अक्सर असां इस्लामी तरीका भी है कि करीबी रिश्तेदार जेह्ड़े न
वो गुस्ल देने सो लिहाजा असेंगी वॉलंटियर दी जरूरत सी सो काफी मसाजिद ने इत्थै मेरी जो लोकल मस्जिद है लोकल लजाओ सेंट्रल मस्जिद उन्हें ट्रेनिंग की है ना सिर्फ मर्दा नहीं उन्हें औरतां ने भी ट्रेनिंग की है कि गुस्ल किस तरह दिता जासी और बिलखसूस इस एनवायरनमेंट विच इन्हां मुश्किलातां विच किस तरह गुस्ल दिता जाना जैसे डॉक्टर जस्टिन आया कि 6-7 बंदे एक बाडी ने अग्गे पिछे नहीं होई सकने कि वो 2 मीटर दूर नहीं होणगे वो या वो डिस्टेंस नहीं है एक दूए नाल जेडी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट है सो ट्रेंड होना ट्रेनिंग जेडी सी है बहुत जरूरी सी जेडी काफी दित्ती गई है और दूसरी जेडी अहम चीज है जेडी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होनी चाहिए पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जेडी है ना वो बहुत जरूरी है उसने लाने तो बगैर सो गुस्सा दियो या तुसा जनाजे विच बैरियल विच शरीक होवो ये भी बहुत बड़ी रिस्क है सो बड़ी मेहनत की थी और तमाम मसाजिद की प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी मिली गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी मिली गई है एक काफी डोनेशंस भी असने अपने कम्युनिटी विच होए न इत्थे ऐसे लोग भी हैं जो पिछले दिनें बर्मिंघम भी बॉडी बैग्स ना काफी प्रॉब्लम पई गया सी और असने अपने चौधरी रासिफ साहब ने उन्होंने 300-400 बॉडी बैग्स बड़ी बिजनेस है उन्होंने डोनेट किए लोग बड़े खुले दिल नाल लगे अचने पे मदद करने पे लेकिन ये जेडी रिक्वायरमेंट्स ना इस हालात विच इन्हां की फॉलो करना बहुत जरूरी है और ये रिक्वायरमेंट्स काउंसिल की कोई खास फायदा नहीं होना असा ये कोशिश करने कि लोगों की जिंदगियां बचाने ते लोग बीमार ना होन उन्हें कोरोना वायरस ना लगे ये कोरोना वायरस ना फैला ताकि असा इस बीमारी ना मुकाबला कर सका True. Justin, being as a Muslim and British, obviously I'm really proud of my Britishness and being as a British Muslim and Kashmiri Muslim and British Kashmiri Muslim, whatever we call it. Now, I strongly take pride that my community have a very strong connection with the humanitarian causes, such as food banks. We put a lot, efforts, especially in Ramadan, holy month of Ramadan. We have a really keen eyes on it. As you can see on this, one of comment at on our timeline, Brother Noman Kumar is saying, "How can the community help more?" So, Arada, ask this question to yourself. Sure. So the first thing the community can do is stay home in the house that you live in. Don't go to friends and family. Please listen to the guidelines that are there. They're done to protect you and to protect your family. I know many of the mosques financially really still need your donations to do their good works. So do continue to give, especially during Ramadan, to them. And I know also it is a tradition to give food during Ramadan as well. And I would say this year, please donate online and financially to the food banks if you can, to support them to ensure that the people that need help getting food can get it. If you are able to join up with many of the local voluntary organisations, one of the biggest challenges during this time is for us all to keep our mental health healthy. And the things that perhaps we took for granted before become so much more valuable. Getting a letter from a loved one, getting a phone call rather than just a text message to have a chat is really, really important. So those are all things that I think we can all do to take action and to contribute to the effort to really reduce the impact of coronavirus on everyone. So please do make the effort every day to connect with someone you care about and make time for a conversation, because it really matters now. वसीम साहब, obviously ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜੈਨਰਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਬਿਲਖਸੂਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਭਰਾ ਆ ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋ ਮਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਡਿਆਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਰਪਰਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਸ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਏਰੀਆ ਨੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲਾਣੀ ਹੈ क्वेश्चन ये है कि असा जड़ा जाहिर बात है मच असा लाइक करने डोनेट करना बंदे की खाना खिलाना और मैं पसंद करना अपने नेबर जेडे गोरे अंग्रेज जेडे मैं उन्हें की चाहना है कि घर बनते है रोटी टूड़ा समोसे पकौड़े में चाहिए प्लेट देना चाहना है सारा कुछ है एक पार्ट ऑफ सारा कल्चर भी है
वसीम साहब, सवाल ये बनना है कि असां जिस तरह डॉक्टर साहब दस्सिया कि किस तरह और केड़े तरीके तुस समझने हो असां हेल्प करी सकने आ जिसने विच असां सेफ्टी भी रवे, सिक्योरिटी भी रवे, एक तो ये चीज, दूसरा असां जेडी गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसकी भी असां फॉलो करने रवां। जिस तरह डॉक्टर साहब दस्सिया तुसां भी कोई इस तरीके नाल कोई असां की गाइड करी सकने हो? पैह्ली गल्ल तुसां जावेद भाई ने जिक्र कीता, एह् लोक जेह्ड़े न, जावेद होई गेआ, होर भी इन्हां दे संगी होई गे न, एह् असां दी कम्युनिटी दे इक बहुत बड़े असासे न। जिस तरीके नाल एह् वॉलंटरी एह् खिदमत करी रहे न, फी सबिल्लाह खिदमत कर रहे न कम्युनिटी, और सिर्फ मुसलमानां दी पूरी कम्युनिटी ना, असें गी फखर होना वा कि इ'यै जेह् असां दे नौजवान हैन, और मर्द औरतां दोए असां दी कम्युनिटी विच बड़े-बड़े लोक न। इस वक्त असां बर्मिंघम विच जेह्ड़ी काफ़ी लोक न, असां उ'नें गी फूड हैम्पर देने आं, और इक अदारा है द एक्टिंग वेलबींग सोसाइटी, टोज़ उ'नें गी आखने इन शॉर्ट विच। तमाम जेह्ड़े फूड बैंक न बर्मिंघम च, उ'नां दी कोआर्डिनेशन विच असां करी ओड़े न। ते एह् काफ़ी लोक असां ने भी उ'नां ने थ्रू उ'नें गी डोनेशंस भी देने, उत्थै वॉलंटियर भी करने। ओह् असां दी एह् कोशिश है बर्मिंघम च कोआर्डिनेशन बेहतर होवै, जिस बंदे की ज़रूरत है ना, ओह् टोज़ नाल राबता करसी, ओह् लिस्ट बनाने पेन और तकसीम करने पे खाना पूरी सिटी विच मुख्तलिफ फूड बैंक्स नाल मिली दा। जरा इस वक्त कोआर्डिनेशन की ज़रूरत है, और पिच्छे जब बिलखसूस को महीना पहले बर्मिंघम विच तमाम जेह्ड़े फूड बैंक्स न, उ'नें गी सख्त ज़रूरत सी फूड दी, और असां दे लोकां काफ़ी उ'नां दी मदद कीती है। सो मैं एह् रिक्वेस्ट करसां कि तुसां खाने ना इक दूए ने तकसीम करो, कि इक दूए दे घर जासो, प्लेटां इक दूए गी देसो, इसने विच बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स होने। तुसां मेहरबानी करियै जेह्ड़े इत्थै बर्मिंघम विच फूड बैंक्स न, उ'नें गी चाहिदा फूड डोनेट करो, या उ'नें गी फाइनेंशियली उ'नें गी पैसे देओ, ताकि ओह् फूड खरीदी सकन। और भी असां दे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान विच बहुत मुश्किलात न। लोक जेह्ड़े दिहाड़ियां लाई ते रोज़ी कमाने सन, शायद उस तरीके नाल नहीं कमाई सकने इस बेल्लै, क्योंकि लॉकडाउन इक किस्म दा उत्थै भी है। उ'नां दी भी मदद करो। हर इक असां ने अपने ग्रां विच गरीब उत्थै मौजूद न, उ'नां दी भी मदद करो, पैसे भेजो। माह रमज़ान दा महीना है, जिस तरीके नाल पैह्ले भी मुस्लिम कम्युनिटी दा रिकॉर्ड है, ब्रितानिया विच जितने डोनेशंस मुस्लिम कम्युनिटी करनी है, देनी है चैरिटी च, कोई और कम्युनिटी नहीं करनी है। इस्सै तरह इंशाअल्लाह इस साल भी मुस्लिम कम्युनिटी दिल खोली ते डोनेट करसन। इत्थै भी डोनेट करो, अपने ग्रां विच, आज़ाद कश्मीर विच, पाकिस्तान विच, जित्थै थुआढ़ा तल्लक है, जित्थै गरीब लोक हैन, उ'नां दी मदद करो। इ'यै एह् जेह्ड़े असां देसां ना, एह् मदद करसां फी सबिल्लाह, ते अगली दुनिया विच अगले जान इ'यै चीज़ां असां गी हेल्प करसन, कि असां कुस-कुस ने मेहनत कीती है, कुस-कुस ने सपोर्ट कीती है इस मुश्किल वक्त विच। सही है। वसीम साहब तुसां जिक्र कीता ते टोज नामे वेबसाइट जेह्ड़ी है तको फटाफट जी, जी, लोड़ी ते बिल्कुल। मैं रखी हुई है। So just as you can see as well, this is very important to mention and acknowledge their role and their great work as well. And we really very much appreciate their hard work as well. Um, Justin, would you like to shed some light on TO's role and activities? So the Active Wellbeing Society are working with Birmingham Council of Voluntary Sector Services to coordinate across the voluntary sector. And the particular bit that TORs do is working across the food banks in the city to help coordinate them. The council has supported them. We put additional money in to buy extra food to support the food banks, because obviously donations were reducing. And just last week I joined a call with all the different food banks talking together, and what was brilliant was to see so many of the mosque food bank representatives on that call. Several of them have come back to me and said actually how brilliant this has been, because sometimes we have food in the north of the city, sometimes in the south or in the east or in the west, but it's not always in the right place at the right time. And by working together, we've been able to move food to where it's needed. They've also worked really hard to make sure that the food packages are respectful of people's religion and their culture. So predominantly they're vegetarian, but they take into account where they can halal, for example, as well. And I think one of the things that will come out of this, which is positive, is that the food banks of the city, including those of the mosques and the temples,
we'll all continue to talk to each other, continue to work in this collaborative way to make sure that the most vulnerable have access to food. And that's an amazingly positive legacy of what is a really challenging time. वही सब मैं एक जरूरी गल करना चाहना जिसने इजाजत है जी प्लीज हुकूमत ब्रिटानिया ने हुकूमत ने 1.5 मिलियन बंदियां की यूके विच खत लिखिया सी कि तुसां 12 हफ्ते 12 वीक्स कर रवो सो शील्डिंग करो तुसां की ऐसी बीमारियां तो बाहर ना जाई सकते फिर लोकल अथॉरिटीज पूरे यूके विच हिदायत मिली सी गवर्नमेंट की तरफों कि ये जेड़ा 1.5 मिलियन जेड़े डेटा दिता गया सी जेड़े जेड़े तुसां एरिया विच अचने ना उन्हां की खाना तकसीम किया जाए सो बर्मिंघम सिटी काउंसिल जी है ना ये जेडे शील्डिंग जेडे लोग शील्डिंग करने पे ना उन्हां की असा डायरेक्ट खाना तकसीम करने हैं ठीक है वो असानी जिम्मेदारी विच अचना हुआ वो जेडे असानी एरिया विच असा बर्मिंघम में कोशिश कीता हुआ क्योंकि असानी काफी मुस्लिम कम्युनिटी काफी इत्थे बड़ी तादाद विच उन्हां विच भी काफी लोग शील्डिंग विच ना कि असा ये सिर्फ हलाल फूड भी उस पैक विच देना कीता हुआ है काउंसिल की जिम्मेदारी है लेकिन कौंसल की जिम्मेदारी तो बाहर भी बहुत ऐसे लोग ने जिन्हें की खाना नहीं मिली रहा तो ये असा फिर बर्मिंघम वॉल्टी सेक्टर काउंसिल और एक्टिव वेलबीइंग सोसाइटी और तमाम जो फूड बैंक्स उन्हें इकट्ठे करी था ये मेहनत की है ताकि उन्हें की फिर असा उन्हें की भी असा मदद करी सका सही है सो ए जी तुसां जिक्र किया लैटर ना तो मैं दसी ओड़िया दोस्तों की भी दसना चाहना है कि जिन्हें नहीं तकिया जाए जेडे दूसरे मुल्कों तकड़े पे या वतन तकड़े पे so I just like to show them as well this is a government wrote to every single citizen of this country जेड़ा इस मुल्क प्राइम मिनिस्टर लिखा जी जेड़ा कोरोना वायरस ने हवाले नाल जेडे खदशात या खतरे जेडे उस हवाले नाल है तो इसने विच दसिया गया है कि क्या कुछ करना है क्या कुछ गवर्नमेंट करी रही है किस तरह इसकी शिकस्त देने या हराने वास्ते असा कम्यूनिटी जी है अपना रोल प्ले करनी है उसकी कितना इंपॉर्टेंट है उसका रोल सो ये सारिया चीज़ा जी इतने वज़ीर आज़म या गवर्नमेंट जी है लोगों की दसियां और एक खत जड़ा है it went to every single household in United Kingdom. Justin, I have a comment for you before I close up and before we finish. This is very important. And Wasim, I also ask you to comment as well. इसने विच जड़ा है first of all जावेद इकबाल साहब acknowledged and thank you for your kind word. Wasim Bhai has said the more we work in a collaborate the more successful we will be. So गठिया काम करसा तो मजीद जी है असा कामयाबी भी लभसी असा की दैट इज रियली समथिंग बस नोमान कमाल साहब ना कमेंट जड़ा अपना करे विच जवाब किनसा तो करे विच सवाल भी करसा लेकिन जस्टिन आई एक्चुअली थ्रो दिस क्वेश्चन टू yourself as well. So the people are coming from Pakistan and Azad Kashmir and across the world back to UK. The government of United Kingdom, what sort of a safety measure is putting in place? Can you? I know it's out of sometimes the question are slightly, yeah. So is the as I just so I understand it, this is the question about bringing people back who are British who are in Pakistan or in other countries, or India or wherever this country. Yeah. So and how are we protecting them when they do arrive back? What sort of measure? Yeah. So there is a national program to try and bring people back if they're able to and they want to come back. As everyone watching will know, it's very difficult to get a plane anywhere at the moment. And so many British citizens were trapped abroad, and the government's been trying to arrange to bring them back. In terms of when they come back, they should be getting advice from the airlines about what to do, and they will probably find that on the plane, the planes are not seated as normal, that people are seated further apart as well. It won't necessarily be the luxury flight that you're used to coming back either. Once you come back, if you're coming back from a country that has a similar kind of outbreak as we do, and in reality most of the world is in the same place now in terms of coronavirus. In general, they're either as bad as we are or they're slightly better, so the risk is much less from them to us as from us to them, if that makes sense. That's perfect.
So in terms of coming back, it's all the things that we're asking everyone to look out for. If you get a temperature or a cough, you should stay at home for 7 days, and your household should stay at home for 14 days. But I think at the moment, from those countries, particularly Pakistan, the epidemic there is similar to here. So it is not an additional risk. It's more the challenge of trying to get a plane. So I've got a couple of more questions, which is I'll try to squeeze in if I can. So Justin, why is the Birmingham basically council only allowing 6 people to attend a funeral while the guideline is for up to 10 people? Sure. So the national guideline doesn't have a number in it. Different councils have made decisions on different numbers of people. In some parts of the country, it is only 2 people or no people allowed to a funeral or a cremation. In Birmingham, the department that looks after this looked at the space that we have. So how much space there is around a grave and how much space in the chapels. And it's not just the 6 people from the family, it's also the staff. So the funeral director staff and the imam or the pastor who's conducting the ceremony. So once you add them in, you get to 10 pretty quickly. But it was based on a risk assessment of the physical space and the average space that we had across the different settings of the city. Some are bigger, but we had to do it so that we had a single number that made sure everyone was safe. We know this is difficult for everyone. It was not a decision that was taken lightly, and it is one that has been continually reviewed. But it is done to protect the living, both the staff that work in those facilities, as well as the mourners, and to protect the living to carry on living while being as compassionate as we can to honour the dead. So thank you Justin. वसीम साहब तुसां जड़ा आ मैं जिस तरह गल्लां बुझियां डॉक्टर साहब दियां काफ़ी सारियां तालीम असां हासिल कीती एजुकेट होए हैं बहुत सारियां चीज़ां लर्न कीतियां एक जिहड़ी चीज़ मैं लर्न कीती है जिहड़ी नवीं सी माड़े वास्ते ऑब्वियसली एक तां फ्यूनरल ने हवाले नाल गुसल ने हवाले नाल समथिंग इज न्यू फॉर मी एज वेल दूसरा अटेंडेंस ने हवाले नाल कोई दसाना नंबर को नहीं है उत्थे ये डिपेंड है मकामी इलाकियां पर उसने पर मसीती च कितनी जगह आ उसने जनाजा गाह विच कितनी जगह आ ये सारियां चीज़ां ये बड़ियां इंपॉर्टेंट सन जिहड़ियां कि असां की बैसीत कम्यूनिटी जाने वसीम साहब दसो है कि इसमें तो पहले कोई कमर शमर को नहीं आ असां क्लोज भी करना है रोजे ने भी टाइम नजदीक लगे है सवा माड़ा लगे है तुसां ने पास अज शुरू होसी बरकैफ ये दसो कि डॉक्टर साहब ने जड़ियां गल्लां न बेशुमार दोस्तां जेह्ड़े न कमेंट कीते मिगी मैसेज भी अच्छे पे बड़ियां पसंद कीतियां ने और माड़ी भी ख्वाहिश है कि डॉक्टर साहब की असां फिर भी इनवाइट करा और क्या तुसां कोई इस तरह ना ख्याल करने हो कि असां इस किस्म ने प्रोग्राम जेह्ड़े न कोई रेगुलर बेस पर करी सकां खास कर स्पेशली रोज़ियां दे म्हीने विच भाई साहब बिल्कुल असा पहले दोबारा थोड़ा शुक्रिया अदा करना चाहें कि एक प्लेटफॉर्म असा की देती है कि अपनी कम्युनिटी ना असा गलबात करी सका और मुख्तलिफ इंग्लिश विच भी और बिलखसूस अपनी मादरी जबान विच असा गल करी सका और वो लोग जेह्ड़े असन न जेह्ड़े बुजुर्ग न बिलखसूस जिन्हें की अंग्रेजी थोड़ी मुश्किलात पैदा होने वो आसान तरीके नाल समझी सकन एक असा इत्थे लोकल भी कल इंक्वायरी हुई है कि एथनिक माइनॉरिटी दी डेथ ज्यादा की हुन गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया आज लेबर पार्टी नेशनली भी ऐलान करेगी असा भी इंक्वायरी करसा और एक चीज बड़ी क्लियर आई रही है कि कम्युनिकेशन ना बड़ा इशू है कि गल्लां जेहड़ियां नो नहीं पुजनियां पियां अदारियां तो कम्युनिटीज की लैंग्वेज बैरियर्स तो जिस तरीके नाल आज इस खूबसूरती नाल आज प्रोग्राम होया मैं उम्मीद करना जेहड़े तुहाडे नाज़रीन उन्हां तुसां तो मैं भी बहुत कुछ सीखिया तो उन्हां भी बहुत कुछ सीखिया उसी तो बिल्कुल मैं हाज़र हां इंशाल्लाह और भी प्रोग्राम करने ते अस तैयार हां और डॉक्टर जस्टिन ने भी बड़ी मेहरबानी है ये भी अच्छे वास्ते तैयार हो सकता और भी जैसे लोकल जो चीफ एग्जीक्यूटिव असन अस्पताल ने उन्हें भी बुलाई सकते हैं और भी जेडे मुतलका अदारे ना इस सिस्टम विच असा जेडे बिलखसूस इस कोरोना वायरस ने जेडा इंपैक्टेड न और जेडे कम करी न फ्रंट लाइन उन्हें की बुलाई ताकि जेडा इंफॉर्मेशन है असा तो उन्हें तक पुजी जाए एक मैं निकी जी गल करसा वो जेडा हमारे घरों सवाल आया सी हमारे भाई ने नुमान कमाल साहब उन्हें एक बड़ा अहम सवाल पूछा सी जिस बंदे वापस आई रहे
हुकूमत की ना कई जगह च बहुत अच्छा कम करी रही है, लेकिन जिथे मैं समझना थोड़ी जी फेलिंग है उसनी भी जरूरी है कि असा भी उसकी पॉइंट ऐड करा। जिला बंदे वापस आ रहे ना उन्होंने कोई इथे टेस्टिंग नहीं हुई रही, जहाज़ा पर लेने सीधे बाहर। मेरी आंटी इथे बिल्कुल मेरे गमांड रहने वो पिछले दिनों पाकिस्तान तो आए, जहाज़ा पर लथे कोई टेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल बाहर आई गए, ठीक है। कुछ मैं एमिरेट्स में सुनिया सी शुरू-शुरू जिला उन्होंने फ्लाइटां जारी सन के दुबई ले उन्हें इंतजामिया टेम्परेचर चेक करने से उन्हें कोई सिस्टम आया सी जा एयरपोर्ट बंदे चेक करने सन, तो जिसी को प्रॉब्लम होनी सी उसकी साइड पर खड़ी था, उन्हें की एडवाइस भी देने सन। हुकूमत हर काम नहीं करी सकनी है, असा की कम्युनिटी की अपना भी सोचना पैसी, अपने आपा की भी बचाना पैसी। ऐसे भी कदम उठाने पैसे कि टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। मैं उनसे की मिसाल देना, मैं टाइप 2 डायबिटिक हां जिसमें मैं आगे दसिया, ठीक है। मैं बहुत केयरफुल हां कि मैं पिछले 6 हफ्ते बहुत कम बार गया वहाँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक वल्नरेबल ग्रुप विच सां। इस तरह से जेड़े-जेड़े सुनने आले, तकने आले वल्नरेबल ग्रुप च ना, बिलखसूस वल्नरेबल ग्रुप, लेकिन हर बंदे की एहतियात करनी चाहिए, अपने आपे की इत्थे बचाओ। ये जेड़ी असां एक कानून बनाए ने 6 या 10 या ये वो, ये बंदे की बचाने वास्ते है, क्योंकि एक बंदे तो बंदा एक बीमारी फैलनी है। तो इंशाअल्लाह जिले असां इस बीमारी ना मुकाबला करी तो कामयाब होसां, तो उले फिर बाकी सिस्टम दोबारा बहाल भी होसी, एक दूसरे जफ्फियां भी लासां, खाने भी इकट्ठे इंशाल्लाह खासां, ईदां भी बनासां, रोजे भी रखसां। इंशाअल्लाह जे अल्लाह ताला ना हुक्म होया तो ये सारियां गल्लां होसन। लेकिन प्लीज़ एहतियात करो, अपने आपे की बचाओ, अपनी फैमिली की बचाओ, कम्युनिटी की बचाओ, घरे रहो प्लीज़ मेहरबानी करके। true. Justin, what would be your last message here to sum up, the summarize everything what we said today? So I think my final message would be to say, stay safe, stay home. This year we will celebrate Ramadan in a way that has never been celebrated before, but we will come together again on the other side, and there will be a happier time to come. But now we all have to do our bit to keep ourselves safe, our families safe, and the community safe by staying at home, washing our hands, and not touching our face. Thank you very much, gents, Wasim and Justin. Thank you very much for coming in my show. It was my first English show in my entire life, actually. I mostly do my show in my own native language and Urdu, of course. But obviously, it was absolutely pleasure, and I have learned a lot of things. I really appreciate Dr. Justin and Wasim Zafar. So, दोस्तों आज मेरी बैटरी है वो सुनने सामने आती है यकीनी तौर पर बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखने का मौका पाया। अगले हफ्ते डॉक्टर जस्टिन और बाकी जेडे दोस्त जेडे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट काम करने उन्हें चुना था अपने प्रोग्राम में पूरा सारे दोस्तों प्रोग्राम में कमाल करना है एक्टिव दा पार्टिसिपेट करने में रोज़ा रखा तो माशाल्लाह रोज़ा जो है वो ब्रेक थोड़ा जगह पे रोज़ा अपने 5 मिनट इंशाल्लाह रोज़ा खोलना तो फिर सारा कुछ ठीक हो जाती अपना ख्याल रखे और अपने इस दुनिया में समय का रोज़ा है उनकी हैप्पी रमज़ान मुबारक जिन्होंने जरा कल है उनके जुबान तक दूसरे जुबान नी पर इसमें अल्लाह रहम करे असन भाई कर अल्लाह रहम करे और अल्लाह सारी इस्लामियत है सारी खुशहालियां है और इस रोज़े महीने में बिलखुसूस अल्लाह ताला करे अपनी खुसूसी मकसद अल्लाह ताला और ये मुसीबत असन मुल्क भी अपना भाई मुल्क भी जिस कितना गुजरना चाह अल्लाह ताला उसी से दूर करे अगले कुछ टाइम प्रोग्राम जो है फिर असा अपने दोस्तों नाल और कोशिश करके इस सिलसिले के ज़्यादा जारी रखें बाकी जो डिपार्टमेंट पेमेंट लिया था बहुत शुक्रिया की इजाज़त अल्लाह सुनने वाला है